The big political story we're tracking this morning, the battle for Maharashtra. There seems to be no resolution in sight for the seat-sharing tussle between the BJP and the Shiv Sena ahead of the crucial assembly elections. In fact, the war of words between the alliance partners has only intensified. Signalling more trouble for the BJP and the Shiv Sena. Party Chief Uddhav Thackeray said that the Sena will not be dictated by anyone, that any decision taken by the party chief will be final. The strong rebuttal came shortly after the BJP gave an ultimatum to its old-time ally to agree to its terms or face a divorce. जी ने शिवसेना नेताओं की एक मीटिंग बुलाई, चर्चा हुई। महाराष्ट्र में जो गठबंधन है उस बारे में हमारी पूरी चर्चा हुई। शिवसेना के सभी नेताओं ने शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे जी को पूरे अधिकार दिए हैं इस बारे में निर्णय लेने का। हमने कहा कि महाराष्ट्र का आत्मसम्मान और शिवसेना का स्वाभिमान हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यह आत्मसम्मान शिवसेना प्रमुख जी का विचार, उस बारे में विचार लेने का, बारे में सब कुछ निर्णय लेने का अधिकार हमने। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच आपस में युति को लेकर बातचीत हो रही है। अल्टीमेटम का कोई विषय नहीं है। शिवसेना के नेताओं की बैठक में मालूम पड़ा कि शिवसेना के कोई नेता जो हमने प्रपोजल बात कही है उस पर क्या कहना है वो बताएंगे और इसमें चर्चा होती रहेगी। सबसे आग्रह होना चाहिए वो भ्रष्ट और पॉलिसी पैलेस वाली कांग्रेस एनसीपी सरकार को अपने पद से हटाना और जनता को राहत देना। The BJP State Core Committee is slated to meet today to deliberate on a new strategy to end the stalemate. The BJP had proposed after its landslide victory in the Lok Sabha elections that both parties contest from 135 seats each, but the Sena had rejected their demand. The Shiv Sena is looking to contest from at least 150 seats in the October polls. In the 2009 elections, the BJP had contested from 119 seats and the Sena from 169. However, this time the alliance equation has become more broad-based with the inclusion of 4 more parties. तो नरेंद्र भाई का चेहरा आ गया, सब लोगों ने स्वीकार किया। अब महाराष्ट्र की बात आई, महाराष्ट्र का भी चेहरा होना चाहिए। कौन है महाराष्ट्र का चेहरा? किसके ऊपर जो लोग मतदान करेंगे तो वो देखेंगे भाई हमें किसके ऊपर भरोसा करना चाहिए। उद्धव ठाकरे चेहरा है, मान रहे हैं आप? मैं क्यों नहीं मानूं? रोज मैं आईना देखता हूं। लोग अगर मेरे ऊपर भरोसा करना चाहते हैं, विश्वास रखना चाहते हैं, तो उसमें बुराई क्या है? मैं तो दोनों पार्टियों को अपील करना चाहता हूं कि बीजेपी ने 2 कदम आगे बढ़ा है, दूसरे लोग भी 2 कदम आगे बढ़कर युति का काम का निपटारा करें और महाराष्ट्र के अंदर परिवर्तन की शुरुआत करें। मगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सम्मान के साथ समाधान चाहता है। सम्मान के भोग पर सम्मान के बगैर समाधान नहीं होगा। As the BJP and the Shiv Sena struggle to strike a deal over seat sharing, the ruling Congress NCP combined is facing its own share of alliance hiccups. The NCP has threatened to walk out of the alliance if the Congress doesn't accept its demands. With talks hitting a deadlock, Congress and NCP chiefs are expected to step in and hold talks. Sources say the meeting between Sonia Gandhi and Sharad Pawar would go beyond posturing, and the two leaders are likely to take a few tough decisions, indicating that the NCP might stake claim over the Chief Minister's chair if it emerges as the single largest party. Ajit Pawar said that the NCP would not repeat the mistakes it had committed earlier. In 2009 assembly elections, the Congress and the NCP had won 82 seats and 62 seats respectively, winning the state for the 3rd time in a row. The Congress had contested from 174 seats and the NCP from 114. उद्याच्याला गेले 15 वर्ष नाही, पहिल्या 99 साली आम्ही प्रत्येकजण वेगवेगळे लढलो होतो, परंतु त्याच्यानंतर 2004 ला लोकसभा विधानसभा, 2009 ला विधानसभा लोकसभा आणि 2014 ला लोकसभा अशा 5 सार्वत्रिक निवडणुका आम्ही एकत्रपणे लढलेलो आहे। यावेळेस आम्ही पहिल्यापासून आमची भूमिका स्पष्टपणे त्या ठिकाणी मांडलेली आहे। उद्याच्याला जर कुणाचा वेगळा विचार असेल आणि त्याच पद्धतीने त्यांनी जायचं ठरवलेलं असेल तर आम्हालाही तशाच पद्धतीचा विचार करावा लागेल। ही प्रक्रिया सुरू झालेली आहे। 20 तारखेला अधिसूचना निघते आहे। काँग्रेस पक्षाने आम्हाला 2 दिवसांमध्ये निरोप द्यावा अशी जी काही भूमिका मांडलेली होती
आता त्याच्यासाठी सुद्धा काही तासांचा अवधी शिल्लक राहिलेला आहे, त्यामुळे आम्ही त्यांच्या निरोपाची प्रतीक्षा करतो. In what came as a major blow to MNS chief Raj Thackeray ahead of assembly elections in the state, his party's MLA Ram Kadam announced his decision to join the BJP. Kadam was reportedly unhappy with his party's leadership and has alleged that he was being sidelined. His supporters, however, claim their party leader was forced to quit the MNS due to differences within the top leadership. The MLA from Ghatkopar in Mumbai will join the BJP at an event that will be attended by party chief Amit Shah in Pune. राजसाहेबांचं स्थान माझ्या हृदयामध्ये हे गुरुचं स्थान आहे. माझ्यासाठी ते द्रोणाचार्य आहेत. मी एकलव्य या नात्यानं माझी भक्ती त्यांच्यावरची कायम राहील. माझा राजसाहेबांवर कुठल्याही प्रकारचा आक्षेप नाही. आता कधी कधी काय असतं, एवढं मोठं कुटुंब आहे, एवढं मोठं परिवार आहे, तर याच्यामध्ये मला सातत्यानं खालची काही लोक दाबण्याचा प्रयत्न करत होती, हे नाकारून चालणार नाही. म्हणजे एवढं चांगलं एका ठिकाणी काम करतोय मी, म्हणजे माझ्याकडे 32 लोक मतदारसंघामध्ये पगारावर काम करायला आहेत. का तर माझ्या घाटकोपरच्या लोकांचं रात्री बेरात्री सुद्धा काम कुठलं अडू नये. मला तुम्ही एक जण दाखवावं